Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 59, second year mathematics, chapter number 2, differentiation, and today's topic is theorems on differentiation. Today we will learn some rules or theorems of differentiation. In this lecture, we will be able to find that the derivative of a constant is 0. Also, they will be able to find derivative of a sum or difference of two or more functions is equal to the sum or difference of their derivatives, and also they will able to drive the product rule, or when the two functions is multiplying, then the derivative of the function is equal to the first function into the derivative of the second function plus derivative of the first function into the second function. So these are some theorems of differentiation we will discuss in today's lecture. Now we will start our lecture, and today's question is, what is the derivative of any constant multiple function? अगर आपके पास कोई फंक्शन हो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप कैसा डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं? As we discussed in our last or previous lecture, that the constant multiple rule of a derivative is this: uh, if the function is in the form of this c times function f of x, means there is a c which is a some multiple or which is a constant multiplying with this function c, and you have to find the derivative of this type of function, then it becomes the constant will remain as it is. There is no change in the value of constant. C will remain as it is, and you will take the derivative of this function. So this becomes c times f dash of x, means just you will take the derivative of the function, or differentiation applying just on this function, and c will remain same. Similarly, you can see in the example that we have to find the derivative of this 4x power 4, 4x power 5. So you have to take the derivative. So here this 4 is basically the multiple, or you can say the c. Generally you define above, the c is here. So this 4 will remain as it is, and you will find derivative of this x5. So x5, by using the power rule, it becomes 5 the power first, then variable, and power minus 1. So 5 minus 1 becomes 4. So derivative of x5 will be 5x power 4. So you write here into 5x power 4, and when you multiply 5 with 4, you will get 20 and x power 4. So the result is the derivative of this type of function is 20x4. Here the 4 is remain as it is, and just you find derivative of x power 5. So this is the constant multiple rule of derivative, that derivatives does not apply on the value which is constant. Now we will discuss some other basic differentiation rules which we will use in our exercise 2.3. The this rule, constant multiple rule, we have discussed. Now this is the third or fourth rule, you can say, when the two functions are adding or subtracting. For example, there are two functions f of x and g of x. The first condition is this, that the both functions should be differentiable, that you can able to differentiate both type of functions. Then when the functions are adding or subtracting, then the differentiation of these function is equal to derivative of first function plus derivative of second function, plus in the case the functions are adding, and subtract in this case if the if the functions are subtracting. So this sign will remain as it is, but the sum of the functions, the derivative sum of the function is equal to the derivative of first function plus derivative of second function. You can see in the example that the function is 7 plus x power 12. So this is basically two functions. 7 is this basically representing f of x, the first function, and the x power 12 representing your second function is g of x, and you have to find the derivative of these functions which are basically adding, or you can say sum of the two functions. So it will becomes the derivative of first function का derivative आप लेंगे, और plus second function का derivative आप लेंगे, और दोनों के आंसर्स को add कर देंगे, then the final answer will be the derivative of whole function. So you will take the derivative of 7. 7 is a constant, so by rule, first rule, the derivative of constant is 0, so this is 0, and this plus sign will remain as it is, plus sign, as the functions are adding, and second function is x12, x power 12. So by power rule it becomes 12, and x12 minus 1 becomes 11. So 12x power 11. So it's
derivative is this. So when you add 0 plus this, you will get this again, 12x power 11, which is the basically derivative of this function, basically which is a combination of two functions. Two functions are adding 7 plus x power 12. So here you apply this rule that the sum of the two function derivative of sum of the function is equal to the basically derivative of first function plus derivative of second function. And if there are more than two functions, then the same rule is applied. You will find derivative of each function and add and find the answer, and then at last you will add the answer. So this is basically differentiation rules. Some of the differentiation rules which we will discuss in today's lecture and also in further lectures. First, we have already discussed the constant rule, that the constant derivative of constant is always zero. The power rule, if the function is the power of power, then the power will come first, and x variable and power minus 1, this is called power rule. And the product rule, we have to discuss this rule also, that when functions are basically multiplying each other, two functions which are multiplying, for example there are two functions f and g which are basically multiplying, or you can say the product of two functions, then how to find such derivative of such type of function. So this is called product rule. So when two functions are multiplying and you have to find the derivative of this kind of function, then basically how to find it, you will take the derivative of first function, means तो पहला function को आप derivative ले लेंगे और second function को as it is लिख लेंगे. ओके, आपने जो जिस तरह का फंक्शन है वैसे ही आप उसको as it is राइट डाउन कर लिया, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड करके आपको उसका आंसर को आप सेकंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक टर्म यहाँ से बन जाएगी. प्लस साइन, दिस इज द ऑलवेज प्लस साइन. जब आप प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे हमेशा आपके पास प्लस का साइन है. देन आपको जो सेकंड टर्म कैसे हासिल करेंगे, आपने फर्स्ट टर्म का पहले डेरिवेटिव लिया, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, और जो सेकंड टर्म जो आपने पहले एज इट इज लिखी थी उसको आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो you will find the derivative of second function and multiply with the first function, you will get the second term. उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट जो आपके पास फंक्शंस थे उनका डेरिवेटिव आ जाएगा. अगेन इसको देखें, आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये दो टर्म्स आपके पास कैसे आएंगे. आपने क्या किया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और सेकंड फंक्शन वैसे लिख लिया प्लस का साइन, फिर आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख लिया और सेकंड जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड किया. In this way you can find the derivative of function which are multiplying each other. So ये टर्म आपके पास जो है इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है. आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख लें और सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड कर लें, और बाद में आप क्या करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का जो है एज इज लिखें. तो ये आपके टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. डजंट मैटर बिकॉज़ देयर इज अ प्लस साइन. So you a plus b is equal to b plus a. आपके पास दो आपके पास क्यूमुलेटिव रूल एडिशन में जो है वो वैलिड होता है, इसलिए आप उसको टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं. देन अनदर रूल इज क्वेश्चन रूल, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और चेन रूल को भी हम डिस्कस करेंगे. तो दीज आर सम बेसिक रूल्स. इसके अंदर कांस्टेंट रूल है, तो हमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल है वो भी ऐड होता है, वो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन वो भी रूल हमने पढ़ा है कि वो कैसे अप्लाई होता है. तो अगेन इस स्लाइड में भी देखें, आपके पास कुछ बेसिक रूल है. आपके पास कांस्टेंट रूल है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, पावर रूल है, ये रूल जो हम कह रहे थे कांस्टेंट मल्टीपल रूल के कांस्टेंट आपके पास मल्टीपल जो है जो कांस्टेंट नंबर पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, जस्ट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होगा. और सम रूल जो हमने भी डिस्कस किया कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, तो उनको डेरिवेटिव लगाकर आप लेके ऐड करेंगे. और डिफरेंस रूल पर दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव. सो दीज आर सम बेसिक रूल्स जो आपको आने चाहिए. फर्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, उसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमने उनको सॉल्व किया बाय यूजिंग डेफिनेशन. जो बेसिक डेफिनेशन थी आपके पास, या इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, हमने उसके जरिए डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा. अब हम क्या करेंगे, जो थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपके साथ, ये थ्योरम हमने पढ़े हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल प्लस डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल हमने पढ़ा, देन प्रोडक्ट रूल पढ़ा, सम और डिफरेंस ऑफ द फंक्शन पढ़ा. अब ये हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 ऑनवर्ड्स. ठीक है, हमने ये डायरेक्टली ये थ्योरम अप्लाई करने. अब हम फर्स्ट डेफिनेशन जो है जिस बार हमने सीखी थी हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट अगेन first rule, derivative of constant is 0, and derivative power rule, basically when the function is a form of power, then we can apply the power rule. Derivative of a constant times some function becomes constant time the derivative of the function, the third rule. And the fourth rule is basically sum or difference, and the function, the fourth rule is the
If f and g are differentiable, then you have to find the derivative of the sum of the function will be equal to the derivative of first function plus derivative of second function, and the when functions are subtracting, again the derivative of first function minus derivative of second function. This is called derivative of sum or difference of functions. And fifth one, derivative of a product, or you can say the product rule. If f and g are two functions and differentiable at x, so if both are differentiable, then the product fg is also differentiable. Then the product is also differentiable at x, and written as the function as fx and gx, then the you will find the derivative of first function and second function as it is, plus sign, you will write first function as it is and the derivative of second function. So this is a way how to find the derivative of the function which are basically multiplying each other. So these are the 5 rules, and so further rules we will discuss in our next lectures, inshallah. So we will apply these rules to solve the questions, and we were starting our exercise 2.3 today, and we will do inshallah question number 1, 2 and 5 related to the theorems we discussed. So this is exercise 2.3. The question is differentiate with respect to x. So why this x with respect to x? Because the independent variables in all the question is x. So x is basically your independent variable in these type of question, because x is your the value which you can change, okay, and the dependent variable is here y. So basically you have to find dy over dx, because if you find the derivative of function with respect to x, because x is independent variable here. So you can see that we will do part 1, question number 1, question number 2 and question number 5 today, and apply these theorems we have discussed earlier. So the first question is question number 1. You can see this is a given function x power 4 plus 2x power 3 plus x power x square. So these basically 3 functions are adding together. So we have to find the derivative of this function by using the theorems of rules of differentiation. So first let this function is equal to y is equal to x power 4 plus 2x power 3 plus x square. So we first let the one. So what we have to find? We have to find the derivative. So derivative definition is dy over dx. So this is basically we have to find this dy over dx with respect to x, because x is independent variable here. If there is a t here, so we will have to find with respect to t. If there is this variable, independent variable in z, then we have to find the differentiation with respect to z. But here in this questions of exercise 2.3, the independent variable x, so we have to differentiate with respect to x. So this is basically definition of derivative dy over dx, and again you write d here as it is and dx denominator value as it is, and the y value is basically this, the y function, basically the y is equal to function value. So y, you write the value of y, which is this, y is equal to x power 4 plus 2x power 3 plus x squared. So you write the value of y here. So now there are 3 terms are three functions are adding, and you have to find the derivative. So by the rule of the addition of or subtraction of a function, and we have to find the derivative of each function. So you have to find the derivative of this one, and also this one, and also this one. So you apply derivative to all on these functions. So this becomes a derivative of d by dx into x power 4 plus sign is it and 2. This is basically 2x3. This is a function of type constant into constant the constant is multiplying with some function 2x3. So constant will remain as it is, and you will apply derivative on this x power 3. So you will take derivative of this x power 3, because your the derivative is not applied on the constant value. And last x square, so you will find the derivative of x square. So इन दिस केस आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो तीनों का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस पे आप डायरेक्टली x पावर 4 है तो आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, सिमिलरली लास्ट पे भी x पावर स्क्वायर तो पावर रूल। अब यहाँ पे कौन सा आपके पास रूल लगेगा? ये कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन है, कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन, तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और आप जस्ट उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो नाउ यूजिंग द पावर रूल, आप x पावर 4 का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर रूल। तो पावर विल कम फर्स्ट 4 और x आपके पास वेरिएबल है और पावर में से एक टर्म रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो 4 minus 1 it becomes 4x power 3. So derivative of this x4 will be 4x3. Now you will find the derivative of 2x3. So 2 आपके पास एज इट इज आ गया और x3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा आपके पास?
ये आपके पास 3 फर्स्ट पावर फर्स्ट और x और 3 minus 1 is become x power 2 और 2 3 is 6 so 6x power 2 ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया जो आपके पास सेकंड टर्म थी सेकंड फंक्शन का सॉरी प्लस आपके पास थर्ड फंक्शन क्या है x square so you will find the derivative of this x square so x square will be by using power rule become 2 and x2 minus 1 so this is your 2x so this is the derivative of x square so this is the final answer because there are unlike terms so you cannot simplify further 4x cube plus 6x square and plus 2x is the derivative of this type of function which is basically the combination of three functions basically fx of your plus gx and you can say h of x so three functions are adding and you have to find a derivative of these all three functions so and derivative of this function plus derivative of this function plus derivative of this function and then add the value you will get the answer so by using the theorem of addition of functions you will find derivative of such type of functions this is your question number 1 now we will discuss question number 2 again these are three functions here x power minus 3 the power in the form of minus and 2x power minus 3 by 2 in the power in the form of fraction plus 3 and this is a constant so again there are three functions are adding so first let this function is equal to y is equal to x power minus 3 2x power minus 3 by 2 plus 3 and now differentiate with respect to x so when you write this becomes dy over dx and now this dx will remain same and d is there so now put the value of y is basically this function x minus 3 plus 2 x minus 3 by 2 plus 3 okay now three functions are adding so you have to find derivative of each function this is derivative of first function plus sign is there and 2 will remain as it is because it's a constant multiple of functions so you will apply derivative on this x minus 3 by 2 and derivative of this last function which is 3 is a constant value okay now apply the power rule here so this becomes minus 3 power first and x power minus 1 minus 3 minus 1 become minus 4 this is minus 3 x minus 4 will be derivative of this x minus 3 okay now this 2 will remain as it is and apply power rule on this become minus 3 by 2 first and x minus 3 by 2 minus 1 and when you solve this minus 3 by 2 minus 1 you will get minus 3 by 2 minus 1 you will get by taking LCM you will get minus 5 by 2 so its power is minus 5 by 2 and this 2 will be cancelled out by this 2 so plus minus 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 3x power minus 3 by 2 is this basically after simplifying you will get this answer and now the last term is you have to find the derivative of this 3 then this is 3 is a constant so you know by the rule or theorem of differentiation that the derivative of any constant term will always 0 so you will write 0 here so the final answer is this minus 3x power minus 4 and minus 3 minus 5 by 2 you will take minus 3 common and you will make this power positive or by taking into our denominator 1 over x power 4 plus 1 over x power 5 by 2 is your final answer after simplification so this is how to find the derivative of a function which are more than basically combination of more than one function so you will apply derivative you will we will find derivative of each function and then add the values so now the question number 5 here the two functions are multiplying so we will solve this from this type of question in by two ways हम दो methods को solve करेंगे पहले आपके पास हम इसको क्या करते हैं बेसिकली दो आपके पास फंक्शंस है मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करते हैं so first let this is equal to y is equal to x minus 5 into 3 minus x multiplying both this become 3x minus x square minus 15 and plus 5x so after solving you will get minus x square plus 8x and minus 15 so now this is basically the question as we did in our question number 1 and question number similar to question number 1 and question number 2 so again there's basically combination of three functions x square you will find the derivative of this minus x square so x square derivative is basically 2 power 2 first and x2 minus 1 equal to 2x and minus 2x so its derivative is minus 2x okay minus 2x and derivative of 8x and how to find derivative of 8x so this is 8 multiple with some function so the derivative apply on just x so you will find derivative of x so how you find the derivative of x so by power rule here power is 1 so 8 power will come first so x power minus 1 1 minus 1 so it becomes 8 into 1 into x 1 minus 1 0 so you know anything having power 0
is equal to 1. So it becomes 8 into 1 into 1. So its answer is basically 8. So here you can see अगर आपके पास x है उसकी पावर 1 है तो याद रखें हमेशा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x है सिंपल, उसका डेरिवेटिव आप लेना विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हमेशा आपके पास 1 आंसर आएगा। और बाय यूजिंग पावर रूल आप देख सकते हैं कि 1 पहले आ गया और 1 माइनस 1 0 होता है तो x पावर 0 1 होता है। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो x है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है। इस तरह अगर आपके पास t है और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेने हैं आपने तो आपके पास उसका आंसर भी क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो एनी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल अगेन गिव यू द सेम द ऑलवेज 1 आंसर। ठीक है, ये याद रखना आपने कि कोई भी वेरिएबल आपके पास हो उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल आप फाइंड करो उसकी पावर 1 है तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा हमेशा। ठीक है बेटा, तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया है by using the same method as we did in question number 1 and question number 2। ये आपने बेसिकली क्या था, दो फंक्शन मल्टीप्लाई और थे उसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली थ्री फंक्शंस व्हिच आर बेसिकली एडिंग। -15 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट विल बिकम 0। तो ये अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट का 0 होता है तो आपके पास ये टर्म 0 हो गई और इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सो अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। हम देखते हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट टूल। तो हमने सीखा है कि प्रोडक्ट टूल क्या होता है, उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, प्रोडक्ट टूल हम देख लेते हैं, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो बेसिकली क्या कहता है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें आप, ठीक है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन है आपको आपने एज इट इज राइट डाउन कर देना और बीच में प्लस का साइन आता है। फिर आपने फर्स्ट का पहले डेरिवेटिव लिखा, फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं आप, और जो सेकंड फंक्शन जिसको आपने पहले एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लें। जब इसकी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये प्रोडक्ट टूल कहलाता है जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें दो फंक्शंस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज एफ ऑफ एक्स है पहला फंक्शन जो एक्स माइनस 5 है, और ये आपके पास 3 माइनस एक्स जो है जी ऑफ एक्स है। इसे हमने जरा वाटर समझना है। ये हमने क्या करना है, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, हमने क्या किया कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये dy ओवर dx लिखा और y बेसिकली इस फंक्शन के इक्वल है तो y की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ये सेम स्टेप है जो हमने पहले भी किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास सेम है कि आपने dy ओवर dx लिया। अब आप देखिए ये f ऑफ x है और g और g है। क्या फार्मूला है कि आप पहले f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लें, तो हम जस्ट डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन दिस, या यहाँ पे आपके पास है उसने जो है पहले जी का लिया हुआ तो इस ओके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इसका डेरिवेटिव ले लें या आप इससे, क्योंकि हमने बीच में प्लस का साइन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बीच में प्लस का साइन है तो ये क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के अंदर, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया और सेकंड का डेरिवेटिव की जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके साथ क्या लिखा मैंने डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस। अब हमने क्या किया, जो सेकंड फंक्शन था इसको डेरिवेटिव लिया था, अब उसको एज इट इज लिख दिया और जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको हमने पहले एज इट इज लिखा था उसको हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया। अब आप देखें डेरिवेटिव उसी तरीके से आपने लेना है। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज एक्स माइनस 5 एज इट इज। अब आप देखें ये इसका डेरिवेटिव आप लेने चाह रहे हैं 3 माइनस एक्स का। तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि डी बाई डी एक्स जो अगर आप ले रहे हैं 3 माइनस एक्स का, तो असल में क्या है, दो फंक्शन अंदर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सॉरी 3 माइनस एक्स नहीं पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स डेरिवेटिव आपके पास 3 पे भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव 3 का भी फाइंड करेंगे, इसी तरह माइनस और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का भी फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बिकॉज दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द रूल ऑफ सब्ट्रैक्ट ऑफ टू फंक्शन। डेरिवेटिव 3 का क्या आ जाएगा 0 और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x मैंने अभी आपको कहा अगर x की पावर 1 हो तो यूजिंग पावर रूल भी आप कर सकते हैं या डायरेक्टली भी इसको याद रख लें कि विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल ऑलवेज आंसर इज 1। तो इसका क्या आंसर आ गया आफ्टर सॉल्विंग दिस 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपने पूरा फाइंड किया, वो क्या आ गया 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1 का आंसर क्या आ गया -1। सो दिस इज बेसिकली योर डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस 5 आपका x माइनस 5 आपके पास एज इट इज पड़ा हुआ है और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया वो आ गया 0 माइनस 1। ओके बेटा, तो ये हमने ये फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व किया यहाँ से, ये आपको एज इट इज आ गया और इसका डेरिवेटिव आपको मैंने भी करके दिखाया वो क्या आया 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1 का मतलब है -1। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -1 आ जाएगा। ओके बेटा, अब हम सॉल्व करने लगे सेकंड पार्ट को, प्लस का साइन आपके पास एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट फंक्शन वैसे ही है 3 माइनस एक्स एज, अब आप लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 का। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव आप ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5।
अब डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 का विद रिस्पेक्ट टू x है बेटा, तो हमारे पास क्या है, दो फंक्शन अगेन आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बिकम d ओवर dx, और आपके पास फर्स्ट फंक्शन x है आपके पास माइनस d ओवर dx, और सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है 5 है। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, ये आंसर आपके पास क्या आ गया, ये 1 आ गया फर्स्ट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आ गया 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास क्या आ गया अल्टीमेटली 1 आंसर है। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 आ गया जो आपने x माइनस 5 को फाइंड किया, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ गया। अब यहाँ इसका आंसर -1 था, दिस बिकम -x और +5, तो -x +5 आफ्टर सॉल्विंग ब्रैकेट को सॉल्व किया, दिस बिकम 3, और आपके पास -x और 3 -x आ गया, 3 + 5 आपके पास 8 हो गया, और x -x क्या आ गया -5, तो दिस बिकम 8 - 2x जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया। तो यहाँ पे हम देखिए क्या किया, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको सॉल्व किया। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आप दोनों फंक्शन में से कोई किसी एक फंक्शन को पहले एज से लिख लें। अब यहाँ पे जो 3 - x आपके पास जो फंक्शन पहला फंक्शन उसको एज से लिखा, और सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड किया, प्लस अब जिसका डेरिवेटिव पहले फाइंड किया उसको आपने एज से लिखा, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, और उसको सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व करके सिंपलीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट आया 8 - 2x। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी ये आपको मैंने बताया कि ये चीज आप पहले कर लें और बाद में ये कर लें, इट्स ओके, या आप पहले इसको कर लें और प्लस का साइन इसको कर लें, दोनों को आप लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस बी जो होता है आपको पता है b प्लस a के इक्वल होता है, तो आप इसको इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने फार्मूला आपने यही अप्लाई करना है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज हाउ टू सॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बाय हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। ये हमने प्रोडक्ट रूल के जरिए किया 8 - 2x, और प्रीवियस आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हमने फाइंड किया था आपके पास, जो हमने इसका आंसर बाय यूजिंग जो है एडिशन ऑफ फंक्शन का फाइंड किया, उसमें आप देख सकते हैं कि उसका आंसर भी 8 - 2x आ रहा है। तो ये देखें इसमें भी आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा 8 - 2x, और सेम रिजल्ट आता है। आप इससे मर्जी थ्योरम यूज कर लें तो आपको अपना आंसर सेम होगा। इस पर आप फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन, तो अगेन आपके पास वो भी आंसर सेम आएगा। नौ बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपको उसको सॉल्व करना है और देखना है। देखें कौन सा आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास ये फंक्शन दिए हुए हैं, दिस आर बेसिकली आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करना है। आप हर किसी फंक्शन पे अलग आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके आंसर्स को ऐड करेंगे। फिर आपके पास ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने रिस्पेक्ट टू एक्सिस को डिफरेंशिएट करना है, इसको आपने करके देखना है क्या ये सॉल्व होता है आपसे कि नहीं बाय यूजिंग प्रोडक्ट को। अगेन दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ा ट्राई करना है आपने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो आज हम एक वीडियो देख रहे थे प्रोडक्ट रूल और डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया, इंशाल्लाह इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। आइए वीडियो देखते हैं। So this is about today's lecture। इसमें आज हमने सीखा कि कुछ थ्योरम सीखे, हमने डिफरेंशिएशन के थ्योरम को अप्लाई करने सीखा। उसमें सबसे पहले हमने सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस और दिया सब्जेक्ट ऑफ टू फंक्शन वो देखा हमने, प्रोडक्ट रूल सीखा हमने, और इस तरह कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन उसको हमने डिफरेंशिएट करना सीखा। तो इससे रिलेटेड बेटा कुछ और थ्योरम्स हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमने डिस्कस किया इसके प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करें, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।